will offer a dynamic platform to discuss cutting edge advancements such as AI driven diagnostics, digital health therapeutics, precision medicine, telehealth, robotics, big data analytics, and smart manufacturing. Participants will gain insights into how these technologies can address current healthcare challenges, enhance accessibility, and promote cost effective, high quality care for the state's large and diverse population. By fostering collaboration among academia, industry, and government, the event aims to inspire innovative research, enable technology adoption, and promote strategic partnerships. This conference will play a vital role in shaping a forward looking healthcare ecosystem, ultimately contributing to a healthier technologically. Shiksha Parishad is a premier educational trust in Gorakhpur, founded in 1932 by Brahmalin Digvijay Nathji Maharaj to promote education in eastern Uttar Pradesh. Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur also operated under Maharana Pratap Shiksha Parishad. This university is a multiple disciplinary university in Gorakhpur, Uttar Pradesh, established in 2021, founded by current Chief Minister Shri Yogi Adityanath Ji Maharaj. It was inaugurated by former President Ramnath Kovind on August 28, 2021. MGUG is mainly focuses on pharmaceutical Ayurveda, nursing, paramedical and all technical education. Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur, is a wonderful university on the land of Lord Gorakhnath where every type of education is provided. MGUG is not just a university, it is a family where every student is focused on their education for a bright future. An inauguration is not merely the beginning of an event, but the beginning of ideas that inspire growth, learning, and positive change. I am Pallavi, your host for today's event. Accompanying me is Siddharth, and together we look forward to making the session engaging and memorable. A most radiant and gracious morning to our respected dignitaries, eminent speakers, esteemed faculty members, researchers, industry professionals, dear delegates, and all the enthusiastic participants. A very warm welcome to one and all to the PharmaFutureX 2026, the international conference on digital health, AI, and smart pharma for Viksit Uttar Pradesh, organized by the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur, which is sponsored by ANRF and UPCST. On this inspiring morning of 20th February 2026, we gather here at the serene MGUG campus to explore how cutting edge technologies like artificial intelligence, digital health tools, and smart pharmaceuticals can accelerate drug innovation and contribute to a healthier Viksit Uttar Pradesh and Viksit Bharat 2047. Absolutely. These 2 days conference bring together global thought leaders, innovators, policymakers, and young minds to deliberate on how artificial intelligence, digital health tools, smart pharmaceuticals, advancement can revolutionize drug discovery, patient care,
pharmacovigilance, and safer therapeutics. We are truly honored and privileged to host this landmark here at the serene and inspiring MGUG campus. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते. Every meaningful beginning is marked by light that symbolizes wisdom, hope, and enlightenment. To invoke divine blessings for the successful conduct of this academic gathering, I respectfully invite our honorable dignitaries to kindly proceed for the lamp lighting and Pushpanjali ceremony.
Thank you, respected dignitaries, for gracing this moment with light and blessings. Education refines the mind and devotion purifies the soul. To invoke the divine blessings of Ma Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, learning, and creativity, I would like to invite Anamika and the group for Saraswati Vandana. Ya kunde tushar Saraswati Bhagavati Thank you, Anamika and group, for beautiful and soulful invocation. We now pay tribute to our beloved institution through the Kulgeet. To present Kulgeet, I would like to invite Anamika and group. शिव गोरखनाथ की महिमा मेरा शिव गोरखनाथ की महिमा ज्ञान मेरा ज्ञान मेरा शिव की महिमा मेरा शिव की महिमा मेरा
Thank you, Anamika and Hope. Your voice has beautifully reflected the value and spirit of Constitution.
Kindly give a big round of applause for Anam. Dear delegates, we now begin the formal inauguration proceedings to formally welcome and felicitate our esteemed guest whose presence truly honors this occasion. We are grateful to have our respected chief guest, Dr. G.N. Singh Sir, former Drug Controller General of India and former Secretary cum Scientific Director of the Indian Pharmacopoeia Commission and currently Scientific Advisor to the Chief Minister of Uttar Pradesh, whose long life contribution have shaped national public health and regulatory frameworks. We kindly request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Surinder Singh, Mahayogi Gorakhnath University, to please come forward and felicitate our esteemed chief guest, Dr. G.N. Singh Sir, with memento and conference kit as a mark of our respect and gratitude. It is a proud privilege to welcome the guest of honor, Professor Dr. K. Ramachandra Reddy, Honorable Vice Chancellor, Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur, a torch bearer of integrated health education and a strong advocate of traditional knowledge aligned with modern science. We would now request our Honorable VC, Dr. Surinder Singh Sir, Mahayogi Gorakhnath University, to please felicitate our distinguished guest of honor, Professor Dr. K. Ramachandra Reddy Sir, with memento and conference kit, whose presence has added great value to this occasion. A warm and cordial welcome to our special invitee, Dr. Kanchan Kohli Ma'am, Professor, UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia, whose global exposure and scholarly contributions bring an international perspective to today's academic deliberations. We are delighted by the gracious presence of our reputed guest, Dr. Kanchan Kohli Ma'am. We invite our Honorable Vice Chancellor, Dr. Surinder Singh, Mahayogi Gorakhnath University, to kindly felicitate her with memento and conference kit to express our gratitude. We also extend a warm welcome to our distinguished guest, Sri Puran Chand, Assistant Commissioner, for graciously accepting our invitation and enriching the August gathering with his presence. May I request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Surinder Singh, Mahayogi Gorakhnath University, to kindly felicitate our guest, Sri Puran Chand, with memento and conference kit. We extend our sincere regard to our special invitee, Dr. B.N. Mishra, Director, Government Engineering College, Gonda, and Dean and Head of Biotechnology, Equity. As a symbol of our sincere thanks, I request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Surinder Singh, Mahayogi Gorakhnath University, to kindly felicitate our prestigious guest, Dr. B.N. Mishra, with memento and conference kit. We warmly welcome the President of today's session, Dr. Surinder Singh Sir, Honorable Vice Chancellor, Mahayogi Gorakhnath University, Gorakhpur, a visionary academic leader whose guidance and commitment continue to inspire the entire university fraternity.
May I request Dr. Madhusudan Purohit, Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences and convener of this international conference, to kindly felicitate the Honorable President of this session with memento and conference kit. It is a moment of immense pride for us to warmly welcome our respected Dean, Dr. Madhusudan Purohit, and Principal Dr. Shashikant Singh, whose wisdom and leadership continue to illuminate the path of pharmaceutical academic excellence. Once again, we feel truly honored by the gracious presence of all our respected dignitaries and esteemed guests whose participation has added immense value and dignity to this inaugural session. When industry supports education, society moves forward. Before we proceed further, we take this moment to extend our sincere and heartfelt gratitude to our esteemed industrial professionals from Pravekal, Serum Institute, Alkem, Samarth Life Sciences, and Otsuka Pharmaceutical, as well as Dabur Private Limited, IR Publication, Discount Book Depot. Your generous support and confidence in this international conference have played a pivotal role in transforming this vision into reality and contributed to the success of this conference. We now invite Dr. Madhusudan Purohit, Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences and convener of this conference, to deliver the welcome address and share his opening remark. Good morning, one and all. At the outset, submitting my respectful pranams to the lotus feet of Sri Guru Gorakhnath Guru Parampara, respected dignitaries on the dais, Honorable President Dr. Surinder Singh Ji, Honorable Vice Chancellor of MAHAYOGI Gorakhnath University, Gorakhpur, respected Chief Guest Dr. G.N. Singh Ji, Scientific Advisor to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, as well as former DCGI, distinguished special guest Dr. K. Ramchandra Reddy Ji, Honorable Vice Chancellor of Guru Gorakhnath Ayush University, Professor Dr. B.N. Mishra Ji, Dean Innovation and Social Entrepreneurship, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Dr. Kanchan Koili Ji, Professor at UCSI University, Malaysia, Sri Puran Chand Ji, Assistant Commissioner of Drugs, FDA, Government of UP, eminent invited speakers from across the country and abroad, distinguished officials from CDSCO, directors and heads of various pharmacy institutions across Gorakhpur and various districts of UP, office bearers of Chemist and Druggist Association, representatives of our valued industry partners, officers of the university, respected deans and principals of MAHAYOGI Gorakhnath University, esteemed colleagues, members of the media, esteemed delegates, and last but not the least, dear student friends. It's my great privilege and honor to warmly welcome you all to this international conference on digital health, AI, and smart pharma for Viksit, Uttar Pradesh, being organized by Faculty of Pharmaceutical Sciences, MAHAYOGI Gorakhnath University. We are very happy to have such an august gathering of leaders, regulators, academicians, industry experts, and young scholars assembled in one platform. Your presence not only dignifies this conference but also reflects the collective commitment of academia, government, industry towards advancing the healthcare innovation, pharmaceutical excellence, and the technological transformation. The theme of this conference, digital health, AI, and smart pharma, is both timely and transformative. Digital health technologies, artificial intelligence, and smart pharmaceutical systems are not merely emerging trends. They are redefining the diagnostics, the drug discovery, the patient care, as well as the healthcare delivery globally. The Uttar Pradesh government, under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath Ji Maharaj, is investing more than 2,000 crore
over 3 years into an AI mission to revolutionize the healthcare, creating an AI city in Lucknow, and launching an AI-based entrepreneurship center in Gautam Budh Nagar. The initiatives like development of a dedicated medical device parks, pharma parks, they all aim to position Uttar Pradesh as a national leader in technology driven in coming days. There is no better time than organizing such an event with this team and to align ourselves to the vision of Honorable Maharaj. Traditionally, as you all know, the drug discovery could take over a decade, but now with AI-enabled platforms, it can shorten this timeline by rapidly analyzing the molecular data and predicting the outcomes. The adoption of AI-driven analytics, automated drug discovery, and smart manufacturing significantly reduces the research timelines, operational costs, as well as the failure rates and in the pharmaceutical development. Further, the patient safety also benefits profoundly from the AI-supported clinical decision systems, predictive diagnostics, and real-time monitoring through wearable and remote technologies. Predictive healthcare models will shift medicines from reactive treatment to proactive prevention, which is an evolution itself that can save millions of lives and healthcare costs. So in this conference is going to witness in the next 2 days more than a dozen thoughtfully curated scientific sessions which provide deep insights into the areas such as the AI-powered drug discovery, the health informatics, digital therapeutics, and automated pharmaceutical manufacturing. In addition, we are also happy that over 100 scientific poster and oral presentations are being organized by research scholars, and they contribute to stimulating the academic discussion and advancing the traditional and translational research. Over the next 2 days, I encourage all the participants to actively engage in discussions, share ideas, build collaborations, and inspire one another. Thank you. Thank you so much. Heartfelt thanks to Dean Sir for those warm, visionary, and motivating words that truly set the perfect tone for our 2 days deliberation on digital health, AI, and smart pharma invocation. A souvenir is not merely a publication. It is a legacy that captures thought, vision, and academic spirit. May I request our honorable dignitaries on the dais to kindly release the souvenir cum abstract book edited by Dr. Madhusudan Purohit, Dr. Shashikant Singh, Mr. Sudhanshu Mishra, and Mr. Shivendra Mani Tripathi. The release of this souvenir marks a significant milestone in this conference. We sincerely thank our respected dignitaries for unveiling this beautiful compilation of knowledge and memories. Great institutions grow under the guidance of great mind. It is now our privilege to invite our respected chief guest, Dr. G.N. Singh Sir, to address the gathering and share his valuable insight. Please put your hands together for our chief guest, Dr. G.N. Singh Sir. प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कुलाधिपति अपने परम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में नमस्कार कर इस भव्य जो हमारा ऑडिटोरियम बना हुआ है उसमें आप सारे महानुभावों का हम माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी के तरफ से
स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जब भी इस हाल में इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त होता है। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। हम अपने बीच में जो गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित हैं, उसमें अपने कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो हम लोगों के हमेशा प्रेरक रहे हैं, जिन्होंने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में, ड्रग टेस्टिंग में, रिसर्च इनोवेशन में एक महान भूमिका इस देश में अर्पित की है। आज उनकी यहाँ उपस्थिति कुलपति के रूप में हमें बहुत ही ऊर्जावान बनाती है। प्रदीप राव जी, जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, जिनके अथम परिश्रम से ये विश्वविद्यालय आज इतनी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम उनको इस सभागृह में देखकर अभिभूत महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर रामचंद्र रेड्डी जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक गणमान्य चिकित्सक हैं, यहाँ पर हमारे महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जब भी उनसे मिलने का सौभाग्य होता है, जो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा है कि इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन एंड साइंस होनी चाहिए, उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको पाके हम अपने आप को बड़ा ही अभिभूत महसूस कर रहे हैं। प्रोफेसर बी एन मिश्रा जी, जो AKTU में डीन हैं, जो हमारे गोंडा में एक नया उत्तर प्रदेश सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, उसके डायरेक्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी के आप उत्तर प्रदेश भारत के सबसे सर्वोत्तम वैज्ञानिकों में माने जाते हैं। आपकी आइडिया पूरी दुनिया में मानी जाती है। आज पहली बार यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रोफेसर कंचन कोहली जी, जो AICT में डायरेक्टर रह चुकी हैं, जो जामिया हमदर्द में प्रोफेसर रह चुकी हैं और आज फार्मास्यूटिकल साइंसेस में एक नई व्यवस्था में अपना विशेष योगदान दे रही है। ये विश्वविद्यालय उनको यहाँ पे पाकर हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कंचन कोहली जी का मार्गदर्शन फार्मास्यूटिकल साइंसेस को मिलता रहेगा। हमारे पूरन चंद जी, जो कि फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब लोग आए हुए हैं, हमारे फूड के असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जो रेगुलेटरी सिस्टम है, इसको स्ट्रेंथन किया जाए। उनकी ये इच्छा है कि कोई भी दवा उत्तर प्रदेश में जिसकी गुणवत्ता में किसी तरह का कंप्रोमाइज किया हो, उसका प्रवेश न हो। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा बड़े ही पूर्ण भाव के साथ की जाए। उसके लिए हम FSDA के अपने ऑफिसर्स को बधाई देते हैं कि आने वाले समय में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम अपने फैकल्टी के मेंबर्स जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये सारे सीनियर्स लोग हैं, इनको देख के बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय इतने कम समय में इतनी उन्नति को प्राप्त कर रहा है, आसपास के जो विद्यालयों से आए हुए हमारे फार्मेसी के जो छात्र छात्राएं हैं, इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। अश्विनी जी हमारे बैठे हुए हैं, इन्होंने जो वाटिका हमारी है, इसको एक नया स्वरूप दिया है। हम लोग चाहते थे कि CMAP और CSIR के योगदान से आने वाले समय में हम लोग ऐसी वाटिका बनाएं जिससे कि जो फाइटो फार्मास्यूटिकल्स का आप लोग ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स में पढ़ेंगे, जिसमें एक नया प्रोविजन किया गया है, जिसमें भारत की एक अहम भूमिका होने जा रही है। उसमें ये हो रहा है कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट कितने लोगों ने पढ़ा है, जरा हाथ उठाइए। देखिए, हमारा निवेदन है कि जब हम फार्मेसी पढ़ने आए थे, थोड़ा सा आपकी अनुमति से इनको बता भी सकते हैं, 2-4 मिनट ज्यादा लेंगे, अनुमति है। देखिए, जब हम IIT BHU में पढ़ने गए थे तो हमारे सीनियर ने बताया था कि 2 किताबें हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। एक इंडियन फार्माकोपिया, जो ऐसी मानी जाती है जैसे पश्चिमी देशों में बाइबिल मानी जाती है, तकिया कलाम कही जाती है, वैसे हम लोग जब पढ़ने गए थे फर्स्ट ईयर में, तभी हम लोगों ने इंडियन फार्माकोपिया खरीद ली थी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस, सारे चीजों का
ज्ञान वहां से होता है। दूसरे, जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर में गए, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स, क्योंकि इसकी जानकारी अति आवश्यक है। इसके बाद तब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, इंडस्ट्री की जरूरत क्या है, इनोवेशन क्या होगा। जो आज की थीम हमारी महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस ने जो तय किया है, उसमें डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट फार्मा और विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना की गई है। तो ये चीजें तभी पूर्ण होंगी जब हम अपने ये ज्ञान परंपरा के साथ चलेंगे, जब हम ये देखेंगे कि आधुनिक तकनीकों को कैसे अपनाया जा रहा है। तो ज्ञान परंपरा क्या है? कि जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे गुरुजनों ने पहले से, चाहे वो कक्षा 1 से, चाहे आप बी फार्म कर रहे हैं, चाहे आप एम फार्म करें, पीएचडी करें या पोस्ट डॉक्टर करें, इंडस्ट्री में काम करें, तो हमारा आपसे आग्रह होगा कि आप ये 2 किताब तो जरूर अभी जाके खरीद लीजिए, क्योंकि तभी जाके आप आज की चीजों के अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा पाएंगे। अब हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जब हम 3-4 चीजों को अपनाएंगे, जब हम डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्मार्ट फार्मा की बात करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो, उसके अंदर ऐसी भावना हो कि वो आने वाले समय में उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत न पड़े। अगर जरूरत कभी पड़ती है तो उसके लिए समुचित व्यवस्था हो। इसी के लिए आपको जान के खुशी होगी कि आज की डेट पे हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं और आने वाले समय में 10-15 और खुलने जा रहे हैं। इसमें अनुसंधान की अपरंपार संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी के लिए एक यूपी फार्मा प्रमोशन काउंसिल बनाई, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, केवल आप लोगों के लिए बनाई गई है, जिससे कि भारत में उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल ट्रायल सबसे सर्वोच्च तरीके से किया जाए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा। अभी पिछले दिनों परसों ही हम लोगों ने इस पे बैठक की थी। आने वाले समय में कोई 81 जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स में एक महान भूमिका निभाने जा रहे हैं। कितने लोगों को ये मालूम है कि केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ बायो फार्मा प्रगति के लिए पैसा दिया है? कितने लोग जानते हैं? तो देखिए, हमारा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हम लोग से कहते हैं कि अगर आप जो प्रदेश की, देश की जो नीतियां हैं, अगर उससे अवगत नहीं है तो आप वंचित रह जाएंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को स्मार्ट बनिए, आप डिजिटल सिस्टम को अडॉप्ट करिए। आप जानते रहिए कि हेल्थ सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में क्या भूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। अभी पुरोहित जी ने बताया कि हम लोग कई पार्क बना रहे हैं। अभी ललितपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे 3 तारीख को हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव किया था। आपको जान के खुशी होगी कि पहली बार भारत में जितने कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री हैं, जितने लोग बड़े बड़े फार्मा सेक्टर के मालिक लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश लखनऊ में उपस्थित थे। उन्होंने ये वादा किया है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में फार्मा सेक्टर में, मेडिकल डिवाइसेस में और अनुसंधान में एक महान भूमिका निभाने जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात है और ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिनकी दूरदर्शिता है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सबसे अग्रणी विकसित प्रदेश हो। जो हमारी इकोनॉमी है, वो उनका ये लक्ष्य है कि 29-30 तक $1 ट्रिलियन की हो जाए और 2047 तक जब हम पहुंचेंगे तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है। आप ये मान के चलिए कि आज अगर हमारे घर में एक व्यक्ति 1,000 कमा रहा है तो 2047 में आज के दर के हिसाब से उसके पास 1 लाख की कमाई होगी। तो आप बताइए कि क्या संपन्नता होगी, क्या प्रदेश की उन्नति होगी, किस तरह का स्वप्न देखा जा रहा है। और ये स्वप्न आपके बदौलत देखा जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे हर नवयुवक के पास अपना कार्य करने की क्षमता हो, नौकरी करने की क्षमता हो, नौकर ना बने, नौकरी देने वाला बने। इसी के लिए स्टार्टअप योजनाएं चल रही हैं। सरकार विभिन्न तरीकों से आपको पैसा देने जा रही है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप फार्मा सेक्टर में, फार्मेसी में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके उदाहरण है। जब हम इंजीनियरिंग करना चाहते थे, बीएचयू में जब गए थे आईआईटी में, तो हमने जेई कंप्लीट किया था, हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, लेकिन हमारे पिताजी ने ये कहा था कि जी तुम फार्मेसी पढ़ो। उस समय हमें लगता था कि इन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया,
लेकिन जीवन में जब कड़ी मेहनत और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो सफलता भगवान देते हैं। आज आपको जान के खुशी होगी कि हमारे साथ जो 25 लोग IIT BHU में पढ़े थे, सभी लोग बड़े उच्च पदों पे गए, बड़ी मेहनत किए। शुरू में स्ट्रगल रही, लेकिन बाद का जो सफर था वो बड़ा ही सुहाना था। ये कहने का हमारा तात्पर्य है कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस में जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया है कि आने वाले समय में मेडिकल डिवाइसेस, बल्क ड्रग की स्टार्टिंग मटेरियल्स, जो हमारी ड्रग इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में आए। अभी वो 23 से लेके 26 तक विदेश जा रहे हैं। पहली बार वो दौरा करने जा रहे हैं सिंगापुर और जापान में। जापान हम 3 साल पहले गए थे। जापान के लोग जो फार्मा सेक्टर के थे, मेडिकल डिवाइसेस के थे, वो चाहते थे कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी आए और आके हमसे मिले, और उन लोगों की ये इच्छा है कि उत्तर प्रदेश उसमें सबसे अग्रणीय रोल अदा करने जा रहा है। तो हमारा कहने का ये तात्पर्य है कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ईस्टर्न यूपी में आपको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्लोबल सिस्टम है, बिकॉज दिस conference is international in nature. Many people may be seeing us through online. They are very fortunate that they are seeing the development of Uttar Pradesh. We are going to be a lead state of the country. We want to see that each and every citizen of this country, they be healthy, their happiness be at the top level. They may be showing the globe that how the good governance take place. And the example is our Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji. You see the sea changes which have taken place in such a less time in Uttar Pradesh. In the case study you may see of the Gorakhpur. I was here about 10 years back when the things were very poor. Today you see the Gorakhpur looks like as we are moving in Europe or in America. See the sea changes. If one person is having vision, he can transform the whole state. तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि आने वाले समय में, पहले तो मन में ये ला लीजिए कि फार्मेसी प्रोफेशन जो आपने पढ़ाई के लिए चुना है वो सबसे बढ़िया प्रोफेशन है। ये सेवा भी है, अर्निंग भी है, और दुनिया में नाम कमाने का एक तरीका है। क्यों तरीका है, इसका कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी समय में हम बिल्कुल पीछे माने जाते थे, देश माना जाता था। आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। We are supplying medicine to more than 197 countries. Each and every person of the globe is consuming the medicine made of India. कितनी बड़ी बात है आप लोगों के सहयोग से। आने वाले समय में मेडिकल डिवाइसेस में, इनोवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सबसे लीड स्टेट बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कोई 10,000 एकड़ की जमीन जो हमारी झांसी में है, उसके लिए हम लोग बहुत बड़ी फार्मा साइंस सिटी बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके अलावा बायो फार्मा के लिए कोई 500 एकड़ की जमीन जेवर एयरपोर्ट के पास माननीय मुख्यमंत्री जी विचारार्थ है कि वहाँ एक बायो फार्मा पार्क, बायो फार्मा सिटी बनाई जाए। हमारे बीच में हमारे पाल साहब जो हैं वो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अद्भुत प्रदेश दिख रहा है जहाँ की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। आपको ये जान के खुशी होगी, अभी कल ही हमारी टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल से और लोगों से बात हो रही थी। बहुत जल्द हम लोग सरकार के सामने प्रस्ताव देने जा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक फार्मास्यूटिकल साइंसेस का विश्वविद्यालय बनेगा, जिससे छात्रों की जो योग्यता है, जो स्किल डेवलपमेंट है, जो उनके अंदर भावनाएं हैं, जब हम भारत के सबसे अग्रणी प्रदेश बनेंगे, जब फार्मा सेक्टर, मेडिकल डिवाइसेस और इनोवेशन में नंबर 1 बनेंगे, तो उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ा समय लगेगा, भविष्य आपका बहुत उज्जवल है और आप लोग बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। जहां पर जिसके कुलाधिपति माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, जिसके कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हो, जिसके रजिस्ट्रार प्रदीप राव जी हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप जीवन में प्रेरणा लीजिए कि ये लोग किस तरह से कार्य करते हैं। कोई 24 आवर्स में 18 घंटे लगातार ये लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। आप नौजवान हैं, हमें पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है
जो उनकी भावनाएं हैं उनको आप प्राप्त करेंगे, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में नाम करेंगे और हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है उसकी एक कंपनी होगी, केवल जॉब वो नहीं चाहेगा। अभी से आप लोग 4-5 लोग मिलकर अपनी कंपनियां बना लीजिए, सोचने लगिए कि हम फार्मा सेक्टर में, मेडिकल डिवाइसेस में, इनोवेशन में क्या करेंगे। नौकरी के चक्कर में ना पड़ी कि 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। अरे दुनिया में जब करोड़ों रुपए आपके पास आने की इच्छा रखता है, जब खुद लक्ष्मी जी आपके पास आना चाहती है तो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? और ऐसा इन्वायरमेंट कभी नहीं मिलेगा, ये हमारा अनुभव है। पुनः हम विश्वविद्यालय के सारे अपने जो शशि जी हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका हम बधाई देते हैं। इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग जाके बताएंगे कि उनका विश्वविद्यालय में जो नए छात्र आए हुए हैं, जो आसपास के जिलों से आए हुए हैं, प्रदेशों से आए हुए हैं, वो एक नई दिशा देंगे और जो उनका संकल्प है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश बनेगा, भारत एक विकसित भारत बनेगा, जिसमें एक नई व्यवस्था होगी। विश्व गुरु बनने की दिशा में जो उनकी परिकल्पनाएं हैं वो सेवा से आती है। हम अच्छी सेवा देंगे, अच्छा कार्य करेंगे और देश में अपना गौरव पूरे विश्व में बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोगों का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Your inspiring and thought-provoking address has enriched this session. Education leadership is about creating opportunities for every learner. We would like to invite the guest of honor, Professor Dr. K. Ramachandra Reddy, sir, to take the podium and address the August gathering. नमस्कार। महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, यशस्वी मुख्यमंत्री और तेजस्वी मुख्यमंत्री और शक्तिमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को नमस्कार करते हुए मंच पर आसीन आज के इस सभा के अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, और आज के इस सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर GN सिंह जी, जो पूर्व में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के डायरेक्टर भी थे, इस समय मुख्यमंत्री जी के टेक्निकल सलाहकार भी है, और मेरा वरिष्ठ छात्रा भी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और मेरा मेंटर भी थे। और साथ में डॉक्टर कांचन कोहली जी और डॉक्टर BN मिश्रा जी और डॉक्टर पूरन चंद जी और डॉक्टर पुरोहित जी और डॉक्टर शशिकांत सिंह जी जो प्रिंसिपल, और सभा में उपस्थित वरिष्ठ गण डॉक्टर GS तोमर जी, डॉक्टर आर्या जी और अन्य विद्वान और बाकी सभी छात्र, बी फार्म के जो स्टूडेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में, इस सुंदर प्रांगण में आप सभी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया। उस प्रयास का ही एक एविडेंस के रूप में आप पीछे देख सकते हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस के जो टाइटल है, डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड स्मार्ट फार्मा फॉर विकसित उत्तर प्रदेश। आपने इतने अच्छे से जो बैनर जो लगाया है, उसी में सारे इंफॉर्मेशन इस कॉन्फ्रेंस का निगूढ़ अर्थ दिया जाता है।
So I am very grateful to be here and as a part of this great conference, and it is the need of the time. The title itself says that the digital health as the science becoming forward in many areas. The pharmaceutical sector also is one of the major branch where you have to take immediate steps to develop this pharmaceutical sector. So digital health is one of the part, and you have to take into upgradation. At the same time, the artificial intelligence allows the world playing a greater role, but particularly in health management, if you are using artificial intelligence, it is good, of course, but there are some problems also in artificial intelligence. In my profession, I have observed. So instead of using artificial intelligence blindly, you have to observe whether this AI system is working properly for your quality enhancement of the pharmaceutical sector, because the pharmacy sector is such a branch where you are going to deal with the patient health, and the death or life depends upon the medicine which you produce. So the artificial intelligence, if it is working healthy, it is very good, like how the weapon is given to the military person who will serve as a soldier and protect the country. Similarly, same weapon, if it is given to the terrorist who is going to kill all the citizens of the country. So the proper usage of artificial intelligence is also a important part. At the same time, the smart pharma, as you have mentioned already in your banners, plastic free and प्रकृति से जुड़े जिम्मेदारी से जिए, जो working with the nature. Ayurveda also says same thing, and save water, save life. These things are the major part of the smart pharma. Use the very small area and highly certified good manufacturing practices may be followed, and the machinery, equipment, and quality control testing apparatus in a stipulated area, if it is working together in a system of pharmaceutical industry, then that becomes a smart pharma. And this smart pharma will help to create lot of medicines, produce lot of medicines in Uttar Pradesh state. In South India, जैसे जैसे दक्षिण भारत में कोई भी घटना हो जाती है, जैसे कोई रेप हुआ, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, कोई घटना हुआ, वहां पर लोग आमतौर पर इस तरह से करते हैं, अगर योगी जी या मुख्यमंत्री रहे तो ये घटना नहीं होती है। अगर योगी आदित्यनाथ जी हम मुख्यमंत्री रहे तो ये रेप नहीं होता, और तुरंत जो है जो भी पर्सन है उनका पनिशमेंट होती है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप सबको, जीएन सिंह साहब से लेकर के यंग पर्सन्स आप जो बैठे हैं यहाँ पर, आप सबका ये दायित्व बनता है कल के दिन ऑल ओवर इंडिया, दक्षिण भारत से लेकर के पूरा प्रदेश में, पूरा देश में ये कहना चाहिए, फार्मेसी सेक्टर होना है तो योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आना चाहिए। तो उसके लिए आप सबका दायित्व, हमारा जीएन सिंह साहब से लेकर के आप सबके दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है।
इस कदम में आप लोग आगे बढ़ते हुए इस कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छा आयोजन किया. इट इज द नीड ऑफ द हावर, इट इज द नीड ऑफ द टाइम, एंड by doing this you can serve the population and also you can enhance the economy of the India, not only Uttar Pradesh. आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा करने के लिए चतुष्पाद होता है, 4 प्रकार के अंग होता है, जिसमें विशक माने वैद्य होता है, फिजिशियन, और द्रव्य औषधि जो, और तीसरा जो है रोगी परिचारक, जो पैरामेडिकल स्टाफ और पेशेंट. ये चारों चीज एक साथ कोऑर्डिनेशन से जब काम करेगा तब वो चिकित्सा सफल होती है. ये आयुर्वेद पद्धति में एक मूल तत्व के रूप में हमारा शास्त्रों में आचार्यों ने हमें बताया है. ये सत्य भी है. इस चिकित्सा क्षेत्र में मेडिसिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट. मेडिसिन प्लेस ए ग्रेटर रोल. दिस मेडिसिन, as Ayurveda also says, medicine is very important. As per your modern science also, medicine is very important. Medicine saves the human life. Medicine also produces different diseases. If adverse effects are there, as Dr. G.N. Singh ji told that you should read the Drugs and Cosmetic Act. It is very clearly mentioned that there are adverse effects also. So medicine is having both the side sharpness like a knife, and if it is properly used, then it works like a amruta that saves the life. As our great Acharya Charaka in Ayurveda mentioned, if it is used improperly, then it creates the death to the patient. It works as a poison. Ancient Acharya and Agnivesh Rishis has been mentioned. So with this, we can understand the right medicine, quality medicine, importance. For producing the quality and right medicine, you are the responsible persons. And this is the step which you have taken by using digital health, taking the help of artificial intelligence, and also making smart pharma industry. You will be leading from Uttar Pradesh, and you will be a model for the total India for developing a pharmaceutical industry. With this, your activities, I also request Dr. G.N. Singh ji and all of you, take Ayurveda industry also along with you and take as a partner Ayurveda industry for using all these purposes, digital health and artificial intelligence, and also smart pharma. Therefore, the integrated system, allopathy and Ayurveda medicines, can work more efficiently by reducing the adverse effects, by taking the consideration of pharmacovigilance programs. The Ayurveda and allopathy drugs integrated therapy maybe produce a noble structure, healthcare structure, and it may be the better approach for bringing the society into a healthy condition. For that purpose, you are the major players, and you can take your sister concern Ayurveda like traditional systems also. So with all these information, I take this opportunity. I am grateful to the dynamic registrar of this university, Mr. Pradeep Kumar Rao ji, who has worked continuously to bring up this university into this final stage.
and also to bring this auditorium also, a beautiful auditorium we are sitting over here. And for this, the Dr. Pradeep Raoji is a responsible registrar of this university. With all this information, I am grateful to all of you for hearing me, and also I am grateful to all the dignitaries present over here. I am also thankful to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, who has given me the chance to work as a Vice Chancellor to MAHAYOGI Guru Gorakhnath Ayush University. Dhanyavad. Namaskar. Thank you, sir, for gracing and honoring us with your esteemed presence and valuable words. Experience is the best teacher, and today we are fortunate to learn from it. With immense pleasure and great respect, I now invite our guest, Dr. B.N. Misra sir, to deliver the address and guide us with your words of wisdom. माननीय डॉक्टर जीएन सिंह जी मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के, डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी वाइस चांसलर महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर, डॉक्टर के रामाचंद्र रेड्डी वाइस चांसलर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर, डॉक्टर कंचन कोहली मैडम प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एट मलेशिया, and then Dr. Yaske Singh, Principal of Pharmaceutical Sciences, and then Dr. Purohit and Registrar of this university. इस संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, देश विदेश से आए हुए विद्वान, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, मैं आप सभी का आभारी हूं, क्योंकि आप सभी से मिलने का परहैप्स एक योग लिखा था, और माननीय डॉक्टर जीएन सिंह जी के बारे में अभी मैं बताऊंगा। उन्होंने मुझे कनेक्ट करा यहाँ से, और बहुत पहले से उन्होंने इस विश्वविद्यालय के बारे में मुझे बताया था, और मनोयोग से मैं शायद कनेक्टेड भी था। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ। और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से जो यह सभागार बना है, इसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने आते ही माननीय डॉक्टर जीएन सिंह जी से कहा कि सर, यह सभागार बहुत अच्छा बना है, यहाँ बैठ के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अब मैं थोड़ा सा अपने मेंटर डॉक्टर जीएन सिंह जी के बारे में बताऊंगा। जब आज हम कहते हैं कि भारत देश जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो मेरा मानना है कि उस फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने की जर्नी में माननीय डॉक्टर जीएन सिंह जी का बड़ा योगदान है। वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रहे, और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई है तो मैंने ये पाया कि दुनिया में ठीक है बहुत सारे लोग विजनरी हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को फार्मेसी के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में आगे बढ़ना है, तो परहैप्स इस देश और प्रदेश के सही दूत यही हैं। और इनसे मैंने इतना कुछ सीखा है पिछले, जब से हमारा संपर्क हुआ है आपसे। और इस प्रदेश में अगर आप देखें तो चाहे वो ललितपुर का आने वाला बल्क ड्रग पार्क हो, या जेवर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना, इवन फार्मा सेक्टर में प्रमोट फार्मा काउंसिल की स्थापना, ये सारी चीजों के एक तरह से सूत्रधार और उसको सही रूप में ग्राउंड पे लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
मैं कई बार जब इन फील्ड्स को कनेक्ट करता हूँ, फार्मेसी को, बायोटेक्नोलॉजी को, मेडिकल टेक्नोलॉजी को और क्लिनिकल रिसर्च को, तो मैं पाता हूँ कि प्रदेश के लिए यह एक मसीहा के रूप में आए हैं, क्योंकि हमारे जैसे वैज्ञानिक अच्छे विचार तो ला सकते हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेकिन उसको धरातल पे लाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं इस विश्वविद्यालय के प्रशासक माननीय कुलपति महोदय और प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय जैसा मैं सोचता था आने के पहले, उससे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारा जीवन जो है, हम जब पैदा होके आते हैं तो हमारे जीवन का प्रोग्राम जो है हमारे डीएनए में होता है, और डीएनए जो है वो 4 केमिकल से बना है। आप जानते होंगे बहुत सारे आनुवंशिकी दोष होते हैं, तो जो क्रम होता है उन केमिकल्स का, वो हमारे प्रोग्राम में थोड़ा बहुत बदल जाता है। वो उसके कई कारण हो सकते हैं, तो हमें दवा की जरूरत पड़ती है और दवाओं से हम फिर करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब ये परिवर्तन ज्यादा होने लगता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब मेडिसिन से क्योर नहीं होता, तो फिर हमें जीवन में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। वो शायद हमारी आखिरी जर्नी होती है। तो जो हमारा 4 केमिकल का कनेक्ट है डीएनए का प्रोग्राम, ये रियली बड़ा महत्वपूर्ण है। सर ने डॉक्टर जीएन सिंह सर ने बात की जापान की। मैं बताऊं आपको, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, वहां पे पॉपुलेशन की एज बढ़ रही है। वहां पे काफी लोग 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स के हैं। तो अब वहां पे बात चलती है कि भाई सर्जरी भी हो तो नॉन इन्वेजिव हो। सिर्फ लंबी उम्र होना महत्वपूर्ण नहीं है, एक लंबी उम्र में हम स्वस्थ रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओल्ड एज में सर्जरी आप सुनते हैं डॉक्टर्स मना करते हैं, तो आजकल बात हो रही है कि हम कैसे अपने सेल को रीप्रोग्राम कर दें, जिस रीप्रोग्रामिंग के तहत फिर वो रीजनरेट हो जाए हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, या रिपेयर हो जाए। तो आजकल नई नई पद्धतियां चल रही हैं। मैं अभी एआई समिट में गया था दिल्ली में, जब लौटा तो आते वक्त मुझे इस कॉन्फ्रेंस का ब्राचर मिला, तो मैंने उस ब्राचर का पीडीएफ अपनी डॉटर को भेज दिया। मैंने कहा बेटा, कोई एआई टूल यूज करके जरा मेरे लिए एक सिंगल स्लाइड का पीपीटी बना दो, ताकि मैं बता सकूं कि भाई एआई की टोटल वैल्यू चेन क्या है जो फार्मा सेक्टर को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। तो उसने नोटबुक एलम, जो गूगल जेमिनाई का एक टूल है, उसको यूज करके एक सिंगल स्लाइड का पीपीटी बना दिया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं वो पीपीटी शेयर करूंगा। तो मैं आप सभी छात्रों से ये कहूंगा, जो ये प्रतिभागी लोग हैं, कि आपके अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, ये दुनिया में किसी से कम नहीं है। बस नौकरी ढूंढना उद्देश्य मत रखिए, ये रखिए कि आप ही इस देश में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलेंगे, इंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। सबसे पहले तो आप लोग एआई टूल यूज करना शुरू करिए, सभी लोग। वो चाहे चैट जीपीटी हो, वो चाहे गूगल जेमिनाई हो, या वो परप्लेक्सिटी हो, एटलीस्ट एक टूल यूज करिए, उसमें मास्टरी हासिल करिए, फिर देखिए एआई कैसे बदलता है तस्वीर को। एक चीज और बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप आजकल रोबोट देखते होंगे, ह्यूमनॉइड देखते होंगे, लेकिन जो इंसान ने हमें बनाया है, अभी उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोट दुनिया में कहीं बन नहीं पाया है। आने वाले समय में शायद बन पाए। एआई भी अभी हमारे ब्रेन की टैलेंट को नहीं कैप्चर कर पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में वह भी होगा। तो मैं आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं मुझे यहाँ अवसर प्रदान करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विश्वविद्यालय प्रगति के पास से बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। We deeply appreciate your gracious presence and the insightful thought you shared with us today. Visionary leadership transforms institution into legacies. I now respectfully invite the president of this session,
Dr. Surinder Singh Sir, Honorable Vice Chancellor, to deliver the presidential remarks. A very good morning to all of you, esteemed dignitaries on the dais, Chief Guest Dr. G.N. Singh, Advisor to Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh and former Drugs Controller General of India, Guest of Honor Professor Dr. K. Ramachandra Reddy ji, the Vice Chancellor of MAHAYOGI Guru Gorakhnath Ayush University Gorakhpur, the special guest of today's program, Dr. Kanchan Kohli, Professor Faculty of Pharmaceutical Sciences, UCSI University, Malaysia. Distinguished guest, Dr. Puran Chand, our Assistant Commissioner of Drugs in the Gorakhpur Division, Dr. B.N. Mishra, who we just heard, Director of Government Engineering College, Gonda, Dean and Head of Biotechnology, AKTU, all the distinguished guests of the dais, invited speakers, delegates, deans, principals, all the participants, members of the organizing committee, and all dear students and representative of the print media. It's a matter of great pleasure and pride to be present on this auspicious occasion to extend the warm greetings to all the participants at today's PharmaFutureX 2026, the international conference on digital health, artificial intelligence, and smart pharma for Viksit, Uttar Pradesh. Now, what I want to share with you is basically divided into three slots. One is that why all we are gathered over here, and what is the occasion, like we are having this conference mainly on artificial intelligence, digital health, and smart pharma. Why now? That's the first part which I would like to draw your attention. Second is, what is artificial intelligence actually doing to the pharma sector as of now? What is happening in the pharma sector when we are using artificial intelligence? And third component is, well, it's fine. There are a lot of events happening in pharma, artificial intelligence. This is also happening. A lot of changes happening in pharma. Then as a student sitting over here, what is this MAHAYOGI Gorakhnath University going to do for me? See, just listening to the lectures is not going to translate anything into reality. It doesn't mean anything. You can find it on YouTube, you can find it in Google, you can just find it on ChatGPT. Everything is there on artificial intelligence. What is this university planning to do for you? Which will bring a change in you so that you are enabled and you are competent enough and you have got the skills to be employed in the med sector or the pharmaceutical sectors in Uttar Pradesh, which Dr. G.N. Singh just talked about. Don't think that the pharma sector is being set up in Uttar Pradesh, medtech center is coming on the Yamuna Expressway, they will give you ready jobs. No. The students have to be industry ready. They have to be ready for the industry, then only industry will take it. Number one. Number two is, your parents have put a lot of money for you to be educated. So how much of package you are going to get? That package will depend upon how much knowledge combined with the skills you have got. And what is this university planning to do for you? That is most important. Because until and unless university does something for you, this just becomes a conference, that's all. So these are the three topics which I will cover in one and one. So first thing is why we are all gathered over here. As we sit in this conference room, there are three major events which are happening in our country at the moment. One is at the national level, that is India AI Impact Summit, which has been organized by Government of India, and this is at Delhi from 16th to 20th. And this is to basically generate an interest in all over the country, and also to bring the best minds globally and within the country to start talking about artificial intelligence. That's one. Second is, under the able leadership of our Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Maharaj, Lucknow is going to be the first artificial intelligence city in the country. How many are you aware of it? Lucknow is going to be the first AI-enabled city in the country, and our Uttar Pradesh government is committed to it under Viksit UP. And third thing, which is very, very important,
which is equally important for all my deans and principals, which I think they should note of it. That is a statement of Shri Abhishek Singh ji, who is the Chief Executive Officer of India Mission, who in Switzerland, in Davos, has said that we will have artificial intelligence to be taught to all the students who are graduating from all the universities in the country. And let me tell you, the reporter asked again, you mean all graduating students? He said, yes. All graduating students, they should know about artificial intelligence. They should know about what is data analytics. They should know about data science. They should know about machine learning. If they have to be capable of contributing to the artificial intelligence ecosystem and the economy. And this requires skilling, reskilling and upskilling. And I congratulate the entire team of our pharmacy college for choosing a highly contemporary and a theme which is aligned with the evolving landscape in our pharma sector. Now, this artificial intelligence, it can be leveraged not just for speed and efficiency, but also for equity, affordability, and patient-centric care. And our curriculum and the pedagogy now needs to be aligned to bring artificial intelligence into the play over here. Now, what we are going to do at MAHAYOGI Gorakhnath University is, first thing which I did was, after listening to Mr. Abhishek Singh, is I called my Dean Academics. I said that you have a meeting with all the deans and the principals, and I would like to hear from him after the holy these vacations are over, that how we intend to bring artificial intelligence being taught to our students and embedded into their curriculum across the specialties. It is not that AI is to be taught only in pharma. AI is to be taught to the management people. AI is to be taught to the medical people, Ayush people. It is our all domains. It has to be tailor-made. The curriculum has to be designed depending upon the subject, but each and every student has to know about data analytics, data science, and machine learning. That is the first thing which we are going to do and introduce in this year. Second thing which we are doing over here is that we have got a center of excellence in artificial intelligence coming in Maharana Pratap Institute of Technology, which is just next door to us in Gorakhpur. So what we have done is, with the help of TCS, we have tied up with Government Institute of Medical Sciences in Greater Noida, which is working already on artificial intelligence clinics, AI clinics. They have introduced AI clinics in their hospital. So our team is already working closely with them how to introduce AI clinics in our hospital. So as a pharmacy students, you can be a part of it, because pharmacy is very closely associated with our hospital. This is second area where we can look into it. Third is, there are 3 programs of Government of India. Because when I was talking to TCS, they said that it would take a lot of time to generate data which will result in meaningful interpretation of AI. But there are 3 programs of Government of India which are collecting data from the country in a very structured manner. You see, what AI requires is data has to be collected in a very structured manner. You see, this all, whether it is artificial intelligence or computics, all depends upon what is the quality of data which we are feeding into it. If the quality of data is good, then outcome will also be good. So there are 3 programs: Pharmacovigilance Program of India, Hemovigilance Program of India, and Material-Vigilance Program of India, where we got a huge data going into thousands of ADRs data which is collected in a very structured format. And TCS said this is the data which can help us in analyzing and showcasing to the country that we are really using AI. Otherwise, it is just left to being a theoretical part of it, and it will take many years for us to come up with the data to actually be resulting into and something very impactful which is going to be done over there. Now, what is artificial intelligence actually doing in our country? I'll give you 5 examples. The first example is artificial intelligence driven platforms. They have significantly accelerated drug discovery by reducing the timelines from 10 to 15 years to 5 to 7 years. So almost the timeline for drug discovery has been cut by half. That's one. Second thing is, where computational screening is available, now the evaluation of millions of molecules which are of interest for us, the timeline for their evaluation has been reduced from 2 to 3 years to almost days.
Can anybody guess how many days? जहां पे किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट की ये मॉलिक्यूल ड्रग बन सकता है, out of millions of thousands of molecules, we have to analyze which one will actually work. So for that, the studies would continue for 3 to 4 years. Animal studies, in vitro studies would need to be done. But now with the computational screening, this timeline can be shortened into how many days? Any guesses by the students? It is 10 to 15 days. So where 2 to 3 years were required, just within 10 to 15 days, we can do the work. Similarly, in clinical research, AI-supported patient recruitment, real-world evidence generation, and predictive analytics have demonstrated up to 40% reduction in clinical trial timelines. Clinical trial also takes about 2 years, and this also time period can be shortened by almost 40%. Third thing is, in digital health, AI-enabled diagnostic systems are now achieving over 90% accuracy. And in this, we had one presentation by Dr. Guleria, who was Director of All India Institute of Medical Sciences. He presented a data where he said that all the X-rays which had been taken of COVID patients, he asked one of his senior residents to work with the AI expert of IIT Delhi and to find out whether anything we have missed. And what they found is that when they have screened all these X-rays by using AI, there was 16% of the patients in which COVID symptoms have been missed in the X-ray. And now this is going to be used in mammography and many other diagnostic techniques. This artificial intelligence is going to be used in the clinical setting also. And last is smart pharmaceutical manufacturing, supported by AI and automation, is improving production efficiency by 15 to 25%, minimizing the batch failures to real-time process monitoring and predictive value. And Indian Pharmaceutical Alliance, how many of you have heard of IPA? Yeah, what is IPA? Okay. You can stand up and say loudly. You see, until unless you don't have confidence, I will also come to that. How you are going to be selected by pharmaceutical company to get a job? You can stand up and tell what is IPA. आपने हाथ खड़ा किया ना, हाँ तो खड़े हो जाइए, बताइए आईपीए क्या है? जरा माइक देंगे इनको, क्या कह रहे हैं? वहां से एक माइक देना इनको, जरा सुने. बिकॉज सी दिस प्रोग्राम इज फॉर द स्टूडेंट्स. अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो इस प्रोग्राम को कोई फायदा नहीं. सो लेट मी लिसन टू हिम. जस्ट प्लीज गिव अ माइक टू हिम. माइक दीजिए उनको, जरा सुने क्या कह रहे हैं आईपी. बिकॉज सी, let me tell you that if you just read the textbooks, if you just read what is the curriculum which has been given to by Pharmacy Council of India, you will just get a degree. But getting a job, and a good job, is a different ball game entirely. What is IPA? Indian Institute of Public Administration. Now, sit down. बैठ. You see, you have to know, I think, Shashikant ji, you please teach them. Because see, it is not only that. They should know what is IDMA, what is IPA, isn't it? So all these pharmaceutical associations which are there, what is FOP? So you should know all these, because if you don't know these things, it's very, very difficult to survive. There are more than 3,000 pharmacy colleges in the country. There's a glut of pharmacy graduates who are passing out in the country than the jobs which are there. So you have to be relevant. Indian Pharmaceutical Alliance, it is an association of 25 top companies of the country. The top manufacturers, Sun Pharma, Zydus, Glenmark, Panacea, these are 25 top companies which are responsible for almost 75 to 80% of the value of the. There are 5,000 companies in our country. लेकिन जो 70% जो ड्रग्स हैं वो ये 25 कंपनीज बनाती हैं. And those 25 companies, the top companies of the country as such. Please just go and read their names also, which are these 25 companies. And these companies, they are going to adopt artificial intelligence to transform India from volume-based to innovation-led pharmaceutical industry. And their target is that by 2030, we should be 120 to 130 billion
pharmaceutical industry. Now, how much is 130 billion or 100 billion? कितना होगा? How much is 120 to 130 billion dollar company, pharmaceutical size? It is 10 lakh crores. If you take 90 rupees for a dollar, it approximately will come to, simple thing is that if you take 1 billion, it will be approximately, if you take 100 rupees for a dollar, approximately it will be 10,000 crores. So it comes to almost 9 lakh crore or 10 lakh crore pharmaceutical industry. At present, Indian pharmaceutical industry is just 4 lakh crore. So within next 4 years, they are thinking that by 2030, Indian pharmaceutical industry will go from 4 lakh crores to 10 lakh crores. And you can become a part of this success story if you know artificial intelligence. And what is the difference between value-based industry and volume-based industry? Anybody? What is the difference between value-based and volume-based? हम इंडिया में क्या है? Value-based है कि volume-based है? We are volume-based. When we say we are the third largest pharmaceutical, we produce large quantities of pharmaceutical drugs at a very low price. But value-wise, we don't stand anywhere in the top 10 in the world. Value-wise, we are very low. Why we are value-wise very low? Just let me give you an example. When I was Drug Controller General of India somewhere in 2008 and 9, there was a molecule which was still in patent at that time. Now it is not there, called a Lipitor. How many of you know what is Lipitor? कौन जानता है लिपिटोर क्या है? देखिए इतना बड़ा फार्मेसी कॉलेज है, अगर आपको लिपिटोर नहीं मालूम तो फिर थोड़ा गंभीर विषय है ये. अटोर्वास्टैटिन सुना है कभी ना? हाँ, तो लिपिटोर किसका मॉलिक्यूल है? अटोर्वास्टैटिन. It's a Pfizer. You see, you have to know which was the company which had a patent on this. The company which had a patent was Pfizer. So Pfizer, the total sale of, at that time, Indian pharmaceutical industry was 2 lakh crores. Or it was just 1 lakh crore. Out of that 1 lakh crore, 50,000 crore used to be exported. And the total sale of the Lipitor in the entire world was equal to half of Indian pharmaceutical industry. तो आप समझिए एक गोली की जो ग्लोबली सेल थी वो हमारी 50% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के बराबर थी. That is what innovation does. So we have to become value based, and that is what pharmaceutical industry is going to become. I think we need to shake up our pharmacy college. You have to have some good sessions with us, right? You see, you have to, because see, otherwise just reading text won't help you. You have to know what is actually prevalent in the market as such. And all these exercises which we are doing over here, we are going to see to it that you are basically aligned with the pharmaceutical industry. And what we are going to do in this regard is, you don't have to worry. I've already told our deans and our registrar also, we had discussed was that when you are going to come in the last year or the last semester, we are going to have finishing school for you. So that one class every day for the entire 6 months would be the finishing school. So 1 घंटे की class आपकी daily होगी on a finishing school, where you will be taught soft skills, how to dress to go for the interview. You will have dummy interviews. You will have people from the industry coming and tell you what skills you should have and what skills are lacking in you. We'll give you those and training in those skills, so that those 6 months you become industry ready. And that will be the finishing school across the board, because ultimately what is going to decide how successful this entire university is will depend upon how many of you get employment when you pass out. How many of you get jobs when you pass out B Pharma or M Pharma. So we have to see to it that almost 100% of you get the placement. So that is a huge target, and we will see to it that you become so capable that all of you get a job. And that's why this seminar is there, this conference is there, so that awareness is created amongst all of you about artificial intelligence. We have got galaxy of speakers who will be talking to you, and I will be requesting all the students,
Please make it very interactive, ask questions, and try to learn from yourself, because this is a part of your finishing school itself. If you are not confident to ask a question, then you will not be confident to answer a question in the interview. So please come out of your hesitation. Let me tell you the last thing. I've interacted with all the students over here. What I have found is you people are very capable, very knowledgeable, and uh, quite good in your subjects. Only thing is, what you need is proper grooming and proper mentoring. If we mentor you proper, and if we mentor you and we do proper grooming for you, I'm sure all 100% of you will end up with very, very good jobs. And this artificial intelligence conference is going to play a major role in equipping you with the knowledge in the artificial intelligence to make it a reality as such. And these words, I welcome you all and request all the students to take very keen interest in the outcomes of this conference. And after this conference, all the students, I will interact with you in that our auditorium, Panchkarma auditorium, and ask you questions also, that how much you have learned about artificial intelligence. With these words, I thank all organizers and all the participants over here and wish this conference a great success. Thank you. We are deeply grateful to our Honorable President for those insightful and thought-provoking presidential remarks. With immense pleasure and respect, we now call upon Dr. Sasikant Singh Sir, Principal, Faculty of Pharmaceutical Sciences, and convener of this conference, to propose the vote of thanks on behalf of entire organizing committee and MGUG family. Respected Vice Chancellor Sir and President of the session, Professor Dr. Surinder Singh Sir, Honorable Chief Guest Sir, Dr. G.N. Singh Sir, Guest of Honor, Dr. K. Ramachandra Reddy Sir, Special Guest, Dr. Kanchan Kohli Ma'am, Distinguished Guest, Dr. B.N. Singh, B.N. Mishra Sir, Shri Puran Chand Sir, respected Deans, Principal, Faculty Members, Delegates, Researcher, Student, and dear participants. It is my proud privilege and honor to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of the inaugural session of PharmaFutureX 2026 International Conference on Digital Health, Artificial Intelligence and Smart Pharma for Viksit, Uttar Pradesh. First and foremost, I express my deepest gratitude to Maharaji, our Chancellor Sir. I express my deepest gratitude to our Honorable Vice Chancellor Sir, President of the session, Professor Dr. Surinder Singh Sir, for his visionary leadership and constant encouragement which inspire us to organize such meaningful academic events. I extend my sincere thanks to our chief guest, Dr. G.N. Singh Sir, for gracing this occasion and sharing his valuable insights. Your vast experience and guidance have enlightened and motivated the academic fraternity. I am highly grateful to our guest of honor, Dr. K. Ramachandra Reddy Sir, for your inspiring words and for strengthening academic collaboration between institutions. My heartfelt thanks to our special guest, Dr. Kanchan Kohli Ma'am, for this auspicious presence and valuable contribution to today's deliberation. I also express sincere appreciation to Sri Puran Chandji for joining us and encourage the pharmaceutical and healthcare community with your extreme presence. I extend special thanks to Dr. B.N. Mishra Sir for your gracious presence and valuable contribution to today's deliberation. I extend our deepest thanks to Registrar Sir, Dr. Pradeep Kumar Sir, for your invaluable guidance, unwavering support, and gracious presence today. Your encouragement has been instrumental in making this event a resounding success. I extend special thanks to Dean Pharmacy, Dr. M.N. Purohit Sir, Deans, Principals, Member of Organizing Committee, Faculty, Staff, Volunteers, and Students. Those tireless efforts ensure the smooth conduct of this session. I would also thanks to acknowledge our delegates and participants from various institutions. On the behalf of MAHAYOGI Gorakhnath University, Gorakhpur, I extend our deepest gratitude to our esteemed sponsors, ANRF, UPCST, and industry partner for your unwavering support. Finally, I thank all media representative, technical team, and supporting staff for valuable cooperation.
With this, I again express gratitude to everyone present here. Let me continue our academic deliberation with enthusiasm and commitment towards innovation, digital health, transformation, and the vision of Viksit Uttar Pradesh. Thank you all. Thank you very much, Principal Sir. Your words have truly enriched the conclusion of this conference. With this, we formally conclude the inaugural session of this international conference. We extend our sincere gratitude to all the esteemed dignitaries, respected speakers, distinguished guests, faculty members, delegates, and all the participants for their gracious presence and valuable contributions. We now request that everyone kindly stand on their respective places for Vande Mataram and National Anthem, marking the close of the inaugural proceedings. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत पंजाब
Ladies and gentlemen, we now adjourn for high tea and networking for the next